Good afternoon, everyone. Myself, Rahul Bansal, Assistant Professor in Civil Department, Chandigarh Polytechnic College. So, in this semester, I will be teaching you the subject Fluid Mechanics, which is a very important subject related to the Civil Engineering Department. So, let us start with introduction of syllabus and subject with the help of PPT. So, here I present a PPT regarding the subject of fluid mechanics. So first of all, we all try to understand what is the meaning of a word fluid mechanics. So here I describe here first mechanics. Mechanics is the oldest physical science that deals with both stationary and moving bodies under the influence of forces. In simple meaning, whenever we apply a force on a stationary body as well as a moving body, then there is something happen inside the body that is known as mechanics. So the branch of mechanics which deals with bodies at rest is considered as statics, while same branch which deals with bodies having motion is known as dynamics. So mechanics is both term given as statics and dynamics. So combination of statics and dynamics is considered as mechanics. So the subcategory which is fluid mechanics is defined as the science that deals with behavior of fluids at rest or in motion and the interaction of fluid with solids or other fluids at the boundaries. तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम डिस्कस कर सकते हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ये एक ब्रांच है साइंस की जिसकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं, जो फ्लूइड है उसका बिहेवियर पता कर सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो रेस्ट पोजीशन में है या फिर वो मोशन पोजीशन में है या फिर वो सॉलिड्स या अदर फ्लूइड्स के साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है, उस टाइप की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। सो इन सिंपल वर्ड्स द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट is considered as fluid statics. Now, fluid mechanics have certain other terms related to the fluid which is also important. So here the study of fluids in motion where pressure forces are not considered is known as fluid kinematics. And if the pressure forces are considered for the fluid in motion, then that branch is considered as fluid dynamics. Fluid mechanics itself divides itself into the several categories like kinematics, dynamics, like that. So here we explain hydrodynamics. Hydro what related with the word water and dynamics related with the movement. So the study of motion of fluid that are practically incompressible. Incompressible कौन से सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम कंप्रेस कर नहीं सकते या जो हमें फील नहीं होता कि कंप्रेस हो गया। फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, गैसेस, लिक्विड्स, लाइक दिस। हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम या फिर बोल नहीं सकते कि दीज आर कंप्रेसिबल। सो दीज आर कंसिडर्ड एज इनकंप्रेसिबल मटेरियल्स. So the study of motion of fluids that are practically incompressible is considered as hydrodynamics. And a subcategory of hydrodynamics is hydraulics, which deals with flow of liquid in pipes and open channels only. So the main question is, what is a fluid? I think every student can ask a simple question, what is a fluid? And no one try to understand. So here I explain you what is a fluid in the simple language. So a substance
which is exist in the nature is primarily have three phases which we consider. First one is solid, second one is liquid, and last one is gas. A substance which is having liquid or gas phase is considered as a fluid because in liquid or gaseous phase the substance has ability to gain static condition as well as in the moving condition. So here is a small difference between a solid and fluid, which is based on the substance ability to resist the applied shear stress, which tends to its shape. Okay, so a solid can resist an applied shear stress by deforming. जो solid है वो deformation means थोड़ा सा टूट जाता है या कहीं से उसके कोई कॉर्नर्स ब्रेक हो जाते हैं, वो अपनी बॉडी को या शेप को चेंज कर सकता है. Whereas a fluid deforms continuously under the influence of shear stress, no matter how small. But जो एक फ्लूइड है वो हर थोड़े थोड़े टाइम या थोड़े थोड़े पोजीशन में अपने आप को डिफॉर्म करता रहता है, पर ये हमें पता नहीं चलता कि उसने कहाँ से कितना किया, क्योंकि वो कंसिडरेशन बिल्कुल स्मॉल होती है. इसलिए हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मीन्स लिक्विड और गैसेज which have intermolecular distances very small. They are considered as fluid. So here I describe you what are the following types of fluid we consider. So first one is ideal fluid. Like ideal is never exist. It is considered as a perfect fluid. So the fluids which are without viscosity, surface tension, shearing force, and compressibility are called ideal fluids or perfect fluids. So students, remember that no single fluid is considered as a perfect fluid. It's just like a perfect fluid. So simple लैंग्वेज में हम बता सकते हैं कि एक ऐसा फ्लूइड जो ना तो उसके अंदर विस्कोसिटी होगी लाइक हनी, सरफेस टेंशन नहीं होगी, हम आगे बताएंगे सरफेस टेंशन होती क्या है, शेयरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी और वो कंप्रेस हो सकता है. ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड और परफेक्ट फ्लूइड. So as I said earlier, ideal fluids all are imaginary fluids and doesn't exist in nature with having such great properties. However, a few fluids such as air, water have exceeding low viscosity, low surface tension, and great resistance to compression. They are considered or treated as ideal fluids for the practical purpose. जैसे भी हम पढ़े हैं कि जो एयर और वाटर है उसके अंदर विस्कोसिटी थोड़ी सी होती है, सरफेस टेंशन भी कम होती है और वो अपने आप को कंप्रेस नहीं हो कर पाते हैं. दे आर इनकम्प्रेसिबल. उन्हें हम अगर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कोई कंसिडरेशंस के लिए हम अज्यूम करते हैं तो उन्हें हम एक आइडियल फ्लूइड या परफेक्ट फ्लूइड की तरह ही हम यूज कर सकते हैं. सेकेंड इज रियल फ्लूइड. रियल मीन्स प्रैक्टिकल फ्लूइड्स और एक्चुअल which are exist in actuality. So the fluid which have viscosity, surface tension, shearing force and compressibility are considered as real fluids. All the fluids which are exist in practical and are in actual, they are considered as real fluids. They are further subdivided in following. First one, Newtonian fluids. The fluids in which shear stress is directly proportional to the rate of shear strain or velocity gradient, these are some important properties, are known as Newtonian fluids. Examples are water, air, kerosene oil, thin lubricating oil, and glycerin, etc. In simple words, we can easily see that the fluid which obey the Newton's law related to the fluid is considered as Newtonian fluids. Non-Newtonian fluid. The real fluids in which shear stress is not proportional to the rate of shear strain or velocity gradient are known as non-Newtonian fluids. And in simple, these type of fluids doesn't obey Newton's law of viscosity. For example, human blood
thick lubricating oil, mud flows in villages area, etc. Third one is ideal plastic or Bingham fluids. In these type of fluids, the shear stress is more than yield stress, or shear stress is proportional to the rate of shear strain or velocity gradient are considered as ideal plastic fluids. Examples are water suspension of clay and fly ash. And last one is thixotropic fluids. These are the sub-branches of non-Newtonian fluids which have non-linear relationship between shear stress and rate of angular deformation beyond the certain yield stresses. Examples are crude oils, printers ink, etc. So we have various type of applications in our daily life related with the fluid mechanics. So here I explain some of the main applicational areas related to the fluid mechanics, which we see in the normal life. First one is biomechanism. In biomechanism, blood flow through arteries and veins in our body. Second, airflow in the lungs. Next, flow of cerebral fluid in our veins. In household areas, we can see that the importance or application of fluid mechanics as first, piping systems for cold water, natural gas, and sewage lines, etc. Piping and ducting network of heating and AC fittings, etc. Next, refrigerators, vacuum cleaners, dishwashers, washing machines, water meter, AC, radiators, etc. All are having the concept of fluid mechanics. Next, in mechanical engineering, design of various type of pumps in various type of vehicles, AC equipments, pollution control equipments, etc. in the vehicles. Design and analysis of aircraft, boats, submarines, rockets, jet engines, wind turbines, biomedical devices, transportation of water, crude oil, all are having the applications of fluid mechanics. In civil engineering, we also use as transport of river sediments, pollution of air and water, design of piping systems in houses and multi-story buildings, and flood control systems. Next, in turbo machines like पंप्स जो हमारे घरों में वाटर के लिए पंप्स होते हैं या फिर हम कूलर्स में देखते हैं पंप, वहाँ पे भी हम टर्बो मशीन्स में इनकी एप्लीकेशन देखते हैं. टर्बाइंस, फैन, ब्लोअर्स, एटसेट्रा. इन मिलिट्री एरियाज, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, ships, underwater vehicle, etc. In automobile industries, we can also see the applications of fluid mechanics as IC engines, means their integrated circuits or engines, AC systems, fuel flow, etc. In medicine areas, heart assist device, artificial heart valve, glucose monitor, drug delivery, etc. In energy, combustion, burner, boiler, gas, hydro plants, wind turbines, etc. In oil and gas industries, pipeline, pump, valve, oil spill cleanup, these are some areas where we use the applications of fluid mechanics. So it means almost everything in our world is either in direct contact or indirect contact with the fluid, or it's itself a fluid. So here are the some important classification of fluid flow. First one is compressible versus incompressible. तो सिंपल लैंग्वेज में हम बता सकते हैं कि कंप्रेसिबल फ्लो कौन सा होता है, फ्लूइड कौन सा होता है, जिस फ्लूइड को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे उसकी शेप एंड साइज या विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन जैसी जो प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबल. और जिन फ्लूइड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं या जो कंप्रेसिबिलिटी को अटेन नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल fluid flow. So a flow is classified as being compressible or incompressible depending upon
the level of variation of density during flow. Here I discuss density. Density is defined as mass per unit volume. Second, incompressibility is an approximation and flow is said to be incompressible if density remains nearly constant throughout. अगर हम किसी भी एक फ्लूइड पे फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, जो उसकी डेंसिटी है जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, अगर वो सेम रहे तो उसे हम कौन सा फ्लूइड कंसिडर किया जाता है? इनकम्प्रेसिबल. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट. लेमिनार का मतलब होता है एक सिंपल फ्लो फ्लूइड का जहाँ पे कहीं पे डिस्टरबेंस ना हो और उसकी जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम रहे, उसे क्या बोलते हैं? लेमिनार. और टर्बुलेंट जहाँ पे जो स्पीड है वो टाइम के साथ प्रॉपर ना रहे, सेम ना रहे, और जो फ्लो है वो भी जिगजैग मोशन है, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट चलता रहे, उसे क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो. So this is also important classification. So in this, some flows are smooth and orderly while others are rather chaotic. So the laminar flow is highly ordered fluid motion characterized by smooth layers of fluid. The flow of high viscosity fluids such as oils at low velocities is typically example of laminar flow. The highly disordered fluid motion that typically occurs at high velocities and is characterized by velocity fluctuations at respect to time is considered as turbulent flow. And in between the laminar and turbulent flow, there is also a flow which exists is considered as transitional flow, as seen in the diagram. First one is laminar flow, bottom one is turbulent flow, and between diagram is transitional flow. Next classification is natural versus forced, means natural respected to unnatural or unforced versus forced flow. So a flow is said to be natural or forced depending on how fluid motion is initiated. हम कैसे बता सकते हैं कि ये नेचुरल फ्लो है या इसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया है? ये हम उसकी सिंपल सी एक चेकिंग देख सकते हैं कि जो फ्लूइड की मोशन है वो स्टार्टिंग कैसे हुई थी. अगर प्रेशर के साथ है तो उसके ऊपर कहीं से फोर्स लगा, इधर इट इज द ह्यूमन फोर्स और इट मे बी द मैकेनिकल फोर्स और इट मे बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर वो स्टार्टिंग से ही स्लो है या उसके ऊपर कोई भी वाइब्रेशंस या फिर वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल फ्लो, लाइक इन द रिवर्स. In forced flow, a fluid is forced to flow over a surface or in a pipe by external means such as a pump or fan. और जैसे हम देखते हैं जब भी किसी पाइप के अंदर फ्लो स्पीडली मूव करता है तो हम चेक करते हैं उसके बैक साइड में कहीं ना कहीं हमने या तो कोई फैन या कोई पंप लगा रखा होगा जिससे उसकी जो स्पीड है या जो उसके ऊपर जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से वो सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है इन हाई स्पीड. In natural flow, any fluid motion is due to natural means such as buoyancy effect, which manifests itself as a rise of warmer fluid and the fall of colder fluid. Next classification is steady versus unsteady flow. So the term steady and uniform are considered frequently in engineering areas, and thus it's important to clear understanding of the meaning of steady and unsteady flow. The term steady implies that no change at a point with respect to time. For example, if I move having a constant speed with respect to time, then I consider my speed is steady speed. The opposite of steady is unsteady speed. The term uniform implies no change with location over a specified region. So here we have some important properties of fluid. First one is density or mass density. As I described previously, the density is considered as mass per unit volume.
It is also considered as mass density of a fluid. So it is defined as the ratio of mass of a fluid with respect to volume of fluid. So it is considered as density or mass density. It is denoted by symbol rho. In SI unit, the mass density is considered as kilogram per meter cube. Mathematically, it is written as rho, which is equal to mass of fluid divided by volume of fluid. For example, the value of density of water we considered is 1 gram per centimeter cube or 1000 kilogram per meter cube for practical purposes. Next one is specific weight or weight density. It is defined as the ratio between the weight of a fluid to its volume. So there is a huge difference between mass density and weight density. In mass density, we use mass of a fluid, and in weight density, we use weight of a fluid. So it is denoted by symbol small w. So mathematically, we can written as small w is equal to weight of fluid divided by volume of fluid. So weight of fluid is considered as mass of fluid multiplied by gravitational force, which is written as small g divided by volume of fluid. So as previous, mass of fluid divided by volume of fluid is considered as density or mass density. So it is can be written as rho. So W is equal to rho multiplied by G. This is the simple derivation for gaining the value of specific weight with the help of mass density. Next one is specific volume. It is defined as the volume of a fluid occupied by a unit mass or volume per unit mass of a fluid is considered as specific volume. So it is defined as or mathematically written as volume of fluid divided by mass of fluid. It is expressed in the term of meter cube per kg. And this type of property is commonly used for the gases, not for the liquids. Next is specific gravity. It is defined as the ratio of weight density of a fluid to the weight density of a standard fluid. For example, अगर हमें किसी एक फ्लूइड की weight density फाइंड आउट करनी है तो हम उसके लिए एक स्टैंडर्ड फ्लूइड को कंसीडर कर लेंगे. जैसे हमने कंसीडर किया वाटर इज कंसीडर्ड एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड टू फाइंड द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेकंड फ्लूइड. तो इसमें स्पेसिफिसिटी में हम क्या करेंगे, एक फ्लूइड जिसकी हमने फाइंडिंग करनी है स्पेसिफिसिटी, उसकी वेट डेंसिटी को स्टैंडर्ड फ्लूइड की वेट डेंसिटी के साथ डिवाइड कर देंगे तो वहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी. इट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल सिंबल एस, कैपिटल एस. इट इज आल्सो known as relative density. So the density of a liquid is written as specific gravity multiplied by density of water. It is the mathematical formula. Next and much important property is viscosity. Viscosity as a viscous means, for example, honey. Honey is a viscous material. So relate this with honey. It is defined as property of a fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of fluid is considered as viscosity. In diagram we can also see velocity profile. तो अब हम इसे सिंपल तरीके से सीखते हैं. अब हमने एक टेबल लिया है या कोई प्लेन सरफेस लिया है, उसके ऊपर हम हनी को ड्रॉ कर देते हैं. तो हम उसे ध्यान से देखेंगे तो हनी की मूवमेंट बिल्कुल ही स्लो दिखाई देगी या फिर हमें फील होगा कि वो मूव ही नहीं करता है, बिकॉज हनी इज मच विस्कस मटेरियल. सो वो मूवमेंट को रजिस्ट करता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, विस्कस मटेरियल बोलते हैं. सेम फ्लूइड की हमारी ये प्रॉपर्टी विस्कोसिटी. इसमें भी जो फ्लूइड है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है रिगार्डिंग द मूवमेंट for respect to the another layer of the fluid. So variation of viscosity with the temperature. Temperature के साथ variations क्या हैं viscosity का, कैसे depend करता है. So first of all, temperature directly affects the viscosity. For example, honey. If
अगर हम हनी को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करने लग जाएंगे, वो दूर दूर फैलना स्टार्ट कर देंगे, और जिसकी वजह से उसकी जो विस्कस नेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगी। अगर विस्कस जो विस्कस उसकी डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगी तो उसकी वजह से जो हनी है वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। सो इट मीन्स टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट्स द विस्कोसिटी। The viscosity of liquid decreases with the increase of temperature, while the viscosity of gases increases with increase of temperature. Okay, next. Such an important property related with viscosity is surface tension. It is defined as tensile force acting on surface of a liquid in contact with a gas such that contact surface behaves like a membrane under the tension. In this, molecules in the interior of fluid mass are surrounded by molecules that are attracted to each other equally. However, some molecules along the surface are subjected to a net force towards the interior side of the surface. So in this diagram, we can easily understand the upper molecule, it is on the surface, and the lower molecule is inside the liquid. So the apparent physical consequences of this unbalanced force along the surface is to create hypothetical skin membrane. A tensile force may be considered to be acting in the plane of the surface along any line in the surface. The intensity of molecular attraction per unit length along any line in the surface is called surface tension, which is denoted by Greek letter sigma, and the SI units of surface tension is Newton per meter. After that, next topic of the subject is hydrostatic pressure. Again, hydro means water or fluid, static means which have the rest position, pressure. So here we explain the first term, pressure. The total force exerted by liquid on any surface in contact with it is called thrust of the liquid, or thrust per unit area is considered as pressure. So in SI system, the unit of pressure is Newton per meter square. अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो हम बोलते हैं कि जैसे ही फ्लड एरिया में एक जो वाटर का फ्लो था वो एक वॉल को हिट करता है तो वो क्या होता है, थ्रस्ट, और उस वॉल का जो एरिया है अगर उसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज प्रेशर। सो उसे हम क्या बोलेंगे कि वाटर ने वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया। सो इस प्रेशर की यूनिट्स क्या कैसे कंसिडर किए जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मींस जो भी हम प्रेशर कंसिडर करेंगे वो पर यूनिट एरिया के हिसाब से हम कंसिडर करेंगे। सो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, कि कितना प्रेशर लगता है कहाँ पर, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर पर यूनिट एरिया। अगेन आप कंफ्यूज मत होना, पहले मैं बताता हूँ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट का मतलब क्या है, जब भी कोई वाटर फ्लो किसी भी वॉल या किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो उस स्ट्राइक पोजीशन को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, और उस सरफेस का जितना भी एरिया होगा उसके साथ डिवाइड कर देंगे उसे हम बोलते हैं प्रेशर। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितना भी हमने प्रेशर लगाया था उसको उस सरफेस के एरिया से दोबारा से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। So it is defined as the pressure per unit area. It is also known as unit pressure or specific pressure, or pressure at a specific point. Next is pressure head. So pressure head is also important term for finding the value of pressure or for finding the intensity of pressure. So pressure distribution of liquids at rest. Consider a container having some mass of liquid. The liquid exerts pressure on all sides and bottom of the container.
इसके लिए भी हम सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने एक ग्लास में वाटर पुट कर लिया, तो हम देखेंगे थोड़े टाइम के बाद जो वाटर है उस ग्लास के सभी सरफेस पे, सभी साइड्स पे और उसकी बॉटम पे भी प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो इस तरह के अलग अलग प्रेशर को हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। बॉटम पे अलग टाइप का प्रेशर कंसीडर किया जाएगा, जो साइड्स हैं वहां पे अलग टाइप से और अलग वैल्यू का वो फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर। तो इन सभी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज कंसिडर्ड एज प्रेशर हेड। एंड लास्ट नोट लीस्ट इज important term which is known as Pascal law related with the pressure of the fluid. So that one is Pascal's law. So a French mathematician having name Blaise Pascal make a law in 1653 which is known as Pascal law. In this law, he states that the intensity of pressure in a static fluid means the fluid which have rest position, is transmitted equally in all directions. कि जो भी एक रेस्ट पोजीशन में लिक्विड होगा वो सभी डायरेक्शंस में अपना प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करेगा। इन अदर वर्ड्स, when certain pressure is applied at any point in a fluid at rest, the pressure is equally transmitted in all the directions and at every other point in the fluid. As seen in this diagram, this is a type of a pipe having on the left hand side the dia or area of pipe is small, and on the right hand side the dia or area of the pipe is large as compared to the left hand side pipe. So here in this small pipe the pressure is nearly equal at every point, and in the large pipe the pressure of fluid is also same in all the directions and every point. When the fluid is moving from the narrow pipe to the larger pipe, then there is a pressure difference. So Pascal law also calculate the pressure difference. So this is the explanation of law. In this, he considered a U-tube which is completely filled with water, and pistons are placed at each end, at the top and bottom of the U-tube. Pressure exerted against the left piston will be transmitted throughout the liquid and against the bottom of the right piston. Thus, the pressure which the left piston exert against the water will be exactly equal to the pressure the water exerts against the right piston. सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसका मीनिंग समझते हैं। तो पास्कल लॉ में हमने कैसे एक्सप्लेन किया, हमने एक यूट्यूब को पिक किया जो कम्प्लीटली वाटर के साथ फिल्ड है, उसके हमने एक लेफ्ट में पिस्टन लगा दिया और एक राइट हैंड साइड में हमने पिस्टन लगा दिया। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से उसमें प्रेशर एक्सर्ट किया तो पहले वो प्रेशर कहाँ पे आया, उस यूट्यूब के अंदर जो वाटर था उसने अपने अंदर उस प्रेशर को एक्सर्ट किया और उसने उस प्रेशर को राइट हैंड साइड के पिस्टन की तरफ ट्रांसफर कर दिया। So the water completely transfer the equal and same force or pressure to the right hand side piston. So this is the Pascal law. So Pascal's principle applies to all types of fluids, either it is gas or liquid. A typical application of Pascal's principle for the gases and liquids is automobile lift, seen in many service stations. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिक जैक, हम वहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोलिक जैक आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में। जब भी कोई सी गाड़ी के सर्विस स्टेशन में हम देखते हैं उन्हें गाड़ी को पिक करना होता है तो एक उसके टायर के नीचे या गाड़ी के नीचे हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं, उसमें एक साइड से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जितना जितना प्रेशर एक्सर्ट यहाँ से करेंगे उतना ही वहाँ से जो लीवर है वो अपर की तरफ या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा और गाड़ी को पिक करना स्टार्ट कर देगा। और सेम जब उसे लोअर करना है वैसे हम यहाँ से प्रेशर रिलीज करेंगे और वो भी उतने ही स्पीड स्लो के साथ धीरे धीरे प्रेशर को डिक्रीज करता है। अनदर एग्जांपल इज हाइड्रोलिक प्रेस which is also based upon the Pascal's principle.
So here I discuss with you some basic application or important applications related with the Pascal's law. First, the underlying principle of hydraulic jack and hydraulic press, which I described earlier. Second, force amplification in the braking system of most motor vehicles. जब भी हम मोटर व्हीकल्स में ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं वो भी किस कंसेप्ट पे लगाते हैं हम, पास्कल्स लॉ। जितने फोर्स के साथ हम ब्रेक अप्लाई करेंगे उतनी ही फोर्स के साथ जो टायर्स हैं वो मूविंग से स्टैटिक पोजीशन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट, यूज्ड इन आर्टिजियन वेल्स, वाटर टावर्स एंड डैम्स। And last and important is scuba divers must also understand this type of principle, which is Pascal's law principle. So thanks a lot. For any query, you can mail me also.